All right. All right, guys. Great, guys. How you all doing? Please type it. Have all right. What happened? Super awesome, guys. Great to see you. I'm super glad and excited to have you here. Hi, Siva Pradhan. Hi, Rajesh. Hi, Preeti. Great. Happy Women's Day to all the beautiful ladies here. And of course, to all the powerful men as well. That's great. Wonderful. Yeah. Super awesome, guys. And wish you all a very happy Mahashivratri as well as happy Women's Day. And this is your coach, Dr. Uma here. And I welcome each one of you to this amazing session. Yeah. And as this is such a big day, and yes, it's a very auspicious occasion of Mahashivratri, है ना, जब हम लॉर्ड शिवा की आराधना करते हैं. So let's also talk about Ardhanareshwar, the union of Shiva and Parvati in one divine form, है ना. So Ardhanareshwar represent करता है harmonious balance को of masculine and feminine energies को, right? And that's why we celebrate the divine union of Shiva and Parvati. So let us also recognize the divinity within each one of us, regardless of the gender. क्योंकि अर्धनारीश्वर क्या है? दोनों ही है ना, right? Men and the women. So regardless of the gender, let's recognize the divinity within each one of us. So type it in the chat box which part of India or which part of the world you have joined in. It will be super awesome to know about you. Okay? Yes. Great. Chennai, Odisha, Hyderabad, Rajkot, Mumbai. Okay, Chhattisgarh. Very nice. Superb. Happy Dehradun. Great. सुपर गाइस. सो आज महाशिवरात्रि भी है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, एक ही साथ है. सो दैट्स अ ग्रेट पावरफुल रिमाइंडर कि हाउ द मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस आर नॉट सेपरेट बट कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, है ना. सो ऑन दिस डुअल सेलिब्रेशन लेट अस ऑनर डिवाइन फेमिनाइन विद इन आवरसेल्व्स एज वेल. Okay, and today I'm here not just as a speaker, but I'm here as a sister, a friend, or fellow traveler on the of this divineness. Okay, and let me share a story about one of my clients. Okay, I'll start with the story of my client so that we all can connect, we can all be on the same page. Okay, so she was very hard working mother. कोविड टाइम में देवर फ्रंटलाइन वर्कर्स जो दिन रात मेहनत करते थे, है ना. बहुत उन्होंने 24 घंटा 48 आवर्स की भी ड्यूटी करी है लोगों ने, राइट. स्पेसिफिकली द फ्रंटलाइन वर्कर्स. तो ऐसे ही मेरी एक क्लाइंट थी हु वाज आल्सो अ फ्रंटलाइन वर्कर ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम. सो लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज्यादा काम, एंड कोविड की वजह से एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी थी. और उसका 2 साल का बेटा भी था, 2-year-old toddler. Yeah. So there was literally no time for herself. She was juggling between work, childcare और घर की सारी responsibilities उसके ऊपर. Okay, तो जब उसको एक दिन छुट्टी मिली तो उसका जो हेड था, डिपार्टमेंट हेड था, वो बोला कि आज रिलैक्स करना घर पर, आज छुट्टी है तो रिलैक्स करना. या बहुत ही आसान सी बात है, इजी सी चीज है. So she told me कि
रिलैक्स। और घर पर मेरी छुट्टी मतलब बच्चे का ध्यान रखना, घर के काम करना और टाइम मिले तो सो जाना। मेरा छुट्टी नहीं है वो, होम फील्स लाइक अनदर जॉब। कितनी लेडीज को ऐसा लगता है कि छुट्टी का मतलब है जो घर के बचे कुचे और भी काम है, अब बच्चों की तरफ और ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे तो हम काम पे लगे रहते हैं, राइट? तो छुट्टी कहाँ है? छुट्टी तो है ही नहीं। एंड देयर इज नो रूम फॉर रिलैक्सेशन इन माई बिजी स्केड्यूल। या एंड आई वाज लाइक, या विमेन जो बहुत ही डिमांडिंग रोल्स पर काम कर रही हैं, सेल्फ केयर इज नॉट सो सिंपल एंड ईजी। बोल तो हम लेते हैं कि यार सेल्फ केयर पे थोड़ा ध्यान दो, राइट? बट इज इट इजी और सिंपल? वो एक बहुत ही बड़ी चीज है। सो वी टेक केयर ऑफ आवर लव्ड वंस, हेल्प देम इन एवरीथिंग। हर चीज, हर बंदे का, जो जितने भी लोग घर पर हैं, फैमिली में हैं, हर इंसान का हम ध्यान रखते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, विच दे वुड अदरवाइज मिस। है ना? फिर हम वो बोलते हैं, अरे थैंक यू, तुमने मुझे याद दिला दिया। बच्चा बोलता है, हाँ मम्मा, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, राइट? So as a mother, as a wife, as a spouse, as a sister, so many roles we are playing. So we are taking care of everybody. देखा जाए तो we are a teacher, we are helper, we are advisor, we are caregiver, all wrapped in one package, isn't it? या एक ही पैकेज में सारे रोल्स को हमने फिट करा हुआ है, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने फिट करा हुआ है। फ्रॉम नर्चरिंग फैमिलीज टू परसुइंग करियर्स एंड पैशंस, सो वी कैन ट्रूली से वी आर द पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। बट ये सारे रोल फुलफिल करते हुए इट इज वेरी क्रूशियल कि हम अपनी हेल्थ, अपने वेलबींग को भी प्रायोरिटाइज करें। ठीक है? और आज मेरा इसी चीज के ऊपर ये मैंने ऑर्गेनाइज किया है, ये सेशन। इसी चीज पर मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ, प्रायोरिटाइजिंग आवर हेल्थ एंड वेलबींग। आई नो आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, मोर देन व्हाट वी कैन पॉसिबली मैनेज, एंड कोविड हैज मेड द सिचुएशन वर्स। क्योंकि मैं आई वाज गोइंग थ्रू द डेटा एज वेल, थोड़ा रिसर्च करा मैंने, एंड फ्रॉम द डेटा विच सजेस्ट कि regardless of the employment situation, women are putting in more hours doing housework and childcare than before the pandemic. Pandemic के बाद चीजें बदल चुकी हैं, है ना? अभी वर्क फ्रॉम होम भी है, कई लोगों का होगा शायद अभी, राइट? कितने लोगों का वर्क फ्रॉम होम अभी चल रहा है? या यस, काफी लोगों का अभी चल रहा है, या फिर हाइब्रिड मोड में है, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, राइट? बट ओवरऑल नेट नेट अगर हम देखें कि सबका वर्कलोड अभी बढ़ गया है, द थिंग्स आर डिफरेंट आफ्टर पेंडेमिक, है ना? सो and moreover, as a woman, what I have seen, and after working with so many clients, what I hear, to build professional credibility and seniority, women put in more time, more efforts, though they feel exhausted, but हमें अपना लोहा मनवाना है ना वर्क प्लेस में भी, कि we are, we can do it. So to build that credibility and seniority, women are putting more working hours as well. Okay. And in the process of putting so much of themselves into caring for others, what is happening? We end up neglecting ourselves. कोई है यहाँ पर जिसको लगता है कि हाँ मेरी हेल्थ बहुत निग्लेक्ट हो रही है, मैं अपने आप को बहुत निग्लेक्ट करती हूँ? या एनीबडी हियर? यस। सो देयर ओन केयर सफर्स। एक्सरसाइज हम भूल जाते हैं, कोई टाइम ही नहीं है। क्लाइंट्स बोलते हैं टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का, खाना खाने का टाइम नहीं है, हेल्दी ईटिंग इज नॉट देयर। वो होता क्या है? या and they gain weight and lose that strength. And you know why women age quickly? Because of this. Yeah, they age quickly and their health deteriorates. Yeah, agree? So women are tireless caregivers, and it has been estimated that over 60 million families are caring for an aging or disabled people at home. ठीक है? एज पर द रिसर्च 60% फैमिलीज जो है, किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं या फिर कोई एलिंग पर्सन है जिसका
ध्यान रखना पड़ता है घर पर, एंड 85% ऑफ द केयर गिवर आर विमेन, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? लेडीज के ऊपर। तो 85% ऑफ द विमेन आर टेकिंग केयर ऑफ देयर एजिंग पेरेंट्स और डिसेबल्ड पीपल, whoever is at home. Okay, and here I'll tell you another, because I've been working with people, so I have example again from one of my clients, जिसने अपने 2 साल, she served her father, okay, her elderly father, who was almost bedridden. She loved spending time with him every minute. जितनी भी उन्होंने सेवा करी अपने फादर की 2 साल, okay, she loved everything. But when he passed away, when her father passed away, she realized the toll which those 2 years had taken on her health and her well-being. क्योंकि obviously what she was doing, ऑफिस का भी काम करना है, घर का भी काम करना है, पापा का भी ध्यान रखना है, right? So putting others first, and those 2 years had taken a big toll on her health. Okay, and there is another client of mine. She had been driving her son. हमें बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। वो अपने बच्चे को स्विमिंग क्लास में छोड़कर आती थी सुबह 4:30 बजे, और शाम को फिर स्विमिंग क्लास में जाती थी, बिकॉज उसका करियर जो चूज करा था वो एज अ स्विमर था, राइट? सो शी वाज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि बचपन से ही हम उनको प्लेयर बनाना चाहते हैं, तो हमें बचपन से ही बच्चों के साथ रहना पड़ेगा ना। वो एफर्ट्स हमें बच्चों के साथ डालने पड़ेंगे कि अगर आपको ये करना है तो ऑब्वियसली माँ को करना पड़ेगा वो चीजें, राइट? एंड शी वाज एवरी सिंगल डे शी वाज डूइंग दैट। एंड वंस द चाइल्ड ग्रोन अप, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बच्चे का खुद बन गया, तो बच्चे को माँ की जरूरत नहीं है ना, बच्चा खुद जा सकता है, राइट? एंड दैट्स वेयर शी रियलाइज कि ऑब्वियसली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमें अकेलापन लगता है कि अरे अब बच्चों की हमारी जरूरत ही नहीं है, राइट? एंड देन शी रियलाइज दैट शी हैड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट ऑल दोज इयर्स because she was running just after one goal. Obviously that is very satisfying कि बच्चा अच्छा कर रहा है, that is very satisfying, but I'm just telling कि we are putting others first. Okay, but क्या इसका मतलब ये है कि हम सबकी केयर करना छोड़ दें? Yeah. What are you getting? Are you getting my point in the true sense? Type it in the chat box if you are getting my point in the true sense, that I'm not telling to stop caring for others and become selfish. सिर्फ अपने बारे में सोचो. I'm not trying to tell you that. Okay? I'm not trying to tell you that stop caring for others or become selfish. That's not my point of view. But to care for others, we need to understand that to care for others, you must care for yourself. जब आप प्लेन में, कितने लोग प्लेन में बैठे हो, या हवाई जहाज की यात्रा की हुई है आपने? तो सबसे पहली अनाउंसमेंट क्या होती है एरोप्लेन में? या सबसे पहली अनाउंसमेंट होती है सेफ्टी की, कि जब ऑक्सीजन की कमी हो तो ऑक्सीजन मास्क पहले आप खुद लगाएं, फिर दूसरों को लगाएं. Yes. Yeah. Put your own oxygen mask first. You can't take care of others if you are running out of air yourself. So it's not selfish to care about your own health. Okay? It's not selfish to care about your own health. It's a self-love. अगर आप स्वस्थ हो, आप फिट हो, राइट, आप हैप्पी हो, अगर आप मुंह चढ़ा चढ़ा के काम कर रहे हो तो मतलब नहीं है, राइट? बिकॉज इट इज हर्टिंग यू फ्रॉम इनसाइड. So it is very happy that you need to be happy first in order to make others happy. Right? If you want to serve your parents in their old age, you need to be healthy. Right? So it's not about being selfish. It is about, it's a self-love. Okay? It's a self-love. अभी हमने दो वर्ड मैंने यूज करे हैं, self-love and self-care. अभी समझते हैं व्हाट इज दिस सेल्फ केयर और सेल्फ लव होता क्या है पहले, ठीक है? इन ट्रू सेंस में हम ये समझना भी बहुत जरूरी है. ओके, क्योंकि सेल्फ लव का बहुत ज्यादा टाइम हम ये सोचते हैं सेल्फ लव मतलब सेल्फिश, अपने से प्यार करना, है ना? एंड सेल्फ केयर मतलब ब्यूटी पार्लर में बैठे रहना. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट सेल्फ केयर का मतलब है ब्यूटी पार्लर में बैठे रहना, और सेल्फ का मतलब है सेल्फिश होकर आराम से अपना ही देखना? Right? So let's understand what is that self-care. Okay? So self-care is basically आप जो actions ले रहे हो,
अपने फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ और वेलबींग के लिए, उसको हम बोलते हैं सेल्फ केयर. ओके, या सो इट इन्वॉल्व्स taking time to prioritize one's own needs and nurture oneself in every aspect of our life, be it physical, social, emotional well-being. क्योंकि हमें तीनों तरीके से फिट होना है, राइट? अगर हम इमोशनली डाउन है, देयर आर so many people struggling with depression and anxiety. Yeah, some of my clients are also on antidepressants, right? Because emotionally they are disturbed. So when we are talking about a health, we are talking about all areas of our life. We need to be fit. It's not only about, there's a definition of health. It's not only about the absence of disease. बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम healthy हैं. Right? So self-care is that, prioritizing every area of your life. Yes. Yeah. और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फिजिकल सेल्फ केयर में आपका आ जाता है कि आप फिजिकल बॉडी की ध्यान रख रहे हो, राइट? डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, प्रायोरिटाइजिंग योर स्लीप, या और ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन हैबिट्स, ये सब आपका फिजिकल में आ जाता है, बिकॉज फिजिकल इज अ बॉडी. देन कम्स योर इमोशंस. इमोशन सेल्फ केयर इज व्हाट? इमोशन सेल्फ केयर इज एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इन अ हेल्दी वे, practicing mindfulness or meditation, setting boundaries in relationship, right? And engaging in activities जो आपको happiness दे, relaxation दे, उसको हम बोलते हैं emotional self care. Yeah, seeking out support from friends, right? जब भी आपको अगर जरूरत पड़े किसी की, तो आप उसका support ले सको. So all these comes under your emotional self care. कभी कभी हमें लगता है अगर हम किसी की सपोर्ट ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, इट्स बीइंग वेरी वीक, कि हम वीक हैं, राइट? बट इट्स नॉट लाइक दैट. टेकिंग हेल्प also shows that you are strong because you are putting more importance on the work, कि ये आपके लिए important है, तो आप इसके लिए support ले रहे हो, right? So taking support, that's your emotional self care. Then comes your mental self care. मेंटल सेल्फ केयर आप कैसे कर सकते हो? लर्निंग न्यू स्किल्स और हॉबीज, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, व्हाट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, एंड मैनेजिंग योर स्ट्रेस लेवल्स. सो ऑल दीज कम्स अंडर योर मेंटल सेल्फ केयर. या एंड देन कम्स योर सोशल सेल्फ केयर. कनेक्शंस बनाना लोगों के साथ, या विद फ्रेंड्स एंड द लव्ड वंस, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम्स, तो वो हो गया आपका सोशल सेल्फ केयर. तो ये सारा का सारा आपका सेल्फ केयर में आ जाता है, आपका फिजिकल बॉडी, इमोशनल, मेंटल एंड सोशल सेल्फ केयर. वेयर एज व्हाट इज दिस सेल्फ लव? सेल्फ लव क्या होता है फिर? ये हो गया हमारा सेल्फ केयर, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. अब सेल्फ लव क्या होता है? दैट्स अ डीप अनकंडीशनल लव एंड एप्रिसिएशन फॉर योरसेल्फ, फॉर वन सेल्फ. अपने लिए वो प्यार होना. You know, I have seen some of the clients who beat themselves up. अरे मेरे से नहीं होता, मैं ऐसे ही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद, राइट? अपने आप को हमेशा ही पुट डाउन करते रहना, राइट? गिल्ट में आते रहना. कई क्लाइंट्स हैं, शायद आप भी हो सकते हो, कि मैंने आज ज्यादा खा लिया, तो चलो गिल्ट में आ गया मैं, और फिर अब मैं 2 दिन और खाऊंगा ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है ये सब करने का. गिल्ट काहे का गिल्ट? Right? You are lacking the self-love then. Okay? Because self-love is what? Self-love is loving yourself irrespective of your weaknesses, irrespective of your faults. जो हुआ वो हो गया. आपने खाया पिया, हो गया. अब आप अपने आप को मार रहे हो, पीट रहे हो कि यार ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, और नेगेटिव डाल रहे हो, तो होगा क्या? वो होगा भी नहीं. And then you are proving yourself right, कि मैंने तो बोला था, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं. Right? So self-love is not that. Self-love is unconditional. कोई भी situation हो, you are forgiving yourself. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Yeah? Accepting yourself fully, including your strength, weaknesses, imperfections, because nobody is perfect. अगर आप सोचो मैं perfect हो जाऊंगा, वो कभी नहीं हो सकता. Nobody is perfect here. Yeah? So self-love is about recognizing one's own worth. Very simple. Self-compassion, योर ग्रैटिट्यूड, योर फॉरगिवनेस, सब आपका जो है सेल्फ लव में आ जाता है.
And no amount of self-care can compensate for the lack of self-love. आप जितना मर्जी अपनी बॉडी पे ध्यान दे लो, जितना मर्जी आप अपने आप को पैम्पर कर लो, बट आप अपने बारे में क्या सोचते हो, that makes a huge difference. Yeah, type with me in the chat box if you are getting my point here. Yeah, आप एकदम फिट हो, आप हर रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, आप हर रोज बढ़िया फिजिक भी बन गया आपका, बट अंदर आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो? That is your self love, guys. So it is like, मोबाइल, आप मोबाइल को चार्ज करते हो, राइट, टू यूज इट, अदरवाइज उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, यू कैन नॉट यूज इट. सेम विद द सेल्फ केयर, आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हो, आप इमोशंस को मेंटेन कर रहे हो टू रन योर लाइफ. बट सो सेल्फ केयर इज अबाउट सर्वाइवल के लिए सब जरूरी है, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, राइट. बट थ्राइव करने के लिए, इफ यू वांट टू थ्राइव इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, यू नीड सेल्फ लव. Yeah, that is the difference between self care and self love. I can see some of the chats coming up. Awesome, thank you so much. And after doing night shift for 3 years, finally I took a break from my job and realized health is much more important than anything. Absolutely, absolutely. क्योंकि आप डबल एनर्जी से कम बैक करोगे. There is always, one step forward, 2 step backward in order to move forward. अगर आपको लगता है कि जरूरी है वो, take that action. Yeah. And how many of you having hard time taking care of yourself? Type me in the chat box. कितने लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है taking care of ourselves? Self care, self love, books में अच्छा लगता है, reality में कैसे होगा, time ही नहीं है मेरे पास तो. Yeah. How many of you are having a hard time taking care of yourself? Type me in the chat box. Yeah, then only the solution will come. And anybody would like to share your story, please raise your hand so that I can bring you on. Because we need inspirations कि आपने अपनी लाइफ में कुछ overcome करा, क्योंकि हम इंस्पिरेशन से मूव होते हैं ज्यादा, कि अच्छा मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस एरिया में और उन्होंने ओवरकम किया, राइट. When we tell, I lost 19 kgs, तो आपको होप आता है, अरे यार ये कर सकती है, मैं भी कर सकता हूँ, राइट. I got rid of my thyroid medicine, तो वो भी पॉसिबिलिटी है. From there the inspiration comes, right? From there the inspiration comes. So anybody would like to share your story? Very nice, Preeti. You must love yourself internally to grow externally or to glow externally. Absolutely, Preeti. Very nice. Very nice. Okay. Super, super. Great to know. Yeah. So type me in the chat box if you really want to, I'll give you 3 strategies today. Real-time strategies which are working with my clients in real time. ठीक है, वो strategies मैं आपको अभी देने वाली हूँ कि how you can prioritize self-care. Okay. Very, very important. Strategy number 1. Okay, if you want to make a note of it, please make a note of it. Because I really want कि आप ये apply करो अपनी life में और आगे बढ़ो और changes देखो अपनी life में कि कितना हसीन हो गई है हमारी life. अब मैं ज़्यादा better enjoy करने लग गई हूँ, मेरी performance better हो गई है, energy levels high हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि emotional game भी है ना हमारे साथ, right? For the women, especially women, we have an emotional game as well. So here goes the first strategy. Okay, the first strategy is start with just 5 to 10 minutes per day. Yeah, take out the time for yourself, 5 to 10 minutes, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, 5 से 10 मिनट. अभी हमारी क्या मेंटालिटी है, हम क्या सोचते हैं, या तो हम पूरा अच्छे से बैठेंगे या फिर हम नहीं करेंगे. या अगर मुझे बुक रीड पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं आधा 1 घंटा बुक ही पढ़ती रहूंगी. अगर मेरे पास आधा 1 घंटा नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगी. मेरे को एक्सरसाइज करनी है बट आई डोंट हैव हाफ एन आवर. If I don't have half an hour, I will not do any exercise. Please change the mindset. आप 5-10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, that is what this strategy is all about. It can help you start
to show up for yourself. आप अपने लिए वो 5-10 मिनट जब निकालते हो, यू स्टार्ट फीलिंग गुड. कहीं से तो शुरुआत करोगे. आपकी फैमिली भी आपको देख रही है, अच्छा ये 5-10 मिनट अपने लिए कर रही है, सो दे ऑल्सो स्टार्ट सपोर्टिंग यू. कि 5-10 मिनट, हाँ वो तो एक ऐसे ही निकल जाता है. 5 मिनट तो सोचते हुए निकल जाता है भाई, इजंट इट? तो अगर वो 5-10 मिनट आप अपने लिए निकालो, राइट, और कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट, नथिंग और फुली इन, वो माइंडसेट नहीं चलेगा आज, स्पेशली इन टुडेज फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल. अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो हमें कहीं ना कहीं कैचअप करना है. वो 5-10 मिनट से आप शुरुआत करिए. Yeah, if you are used to do nothing, just doing something can feel surprisingly amazing. Amazing. आप ट्राई करके देखो. कल से, आज रात से ही आप ट्राई करके देखो. आपको जो चीज अच्छी लगती है और आप सोच रहे हो आपके पास टाइम नहीं है वो सब करने का, आप उसको 5 मिनट के लिए करना शुरू करो, and you will see how great you started feeling. Right? So what you can do is make a list of small, right now also you can do it. Let's do this activity, guys. Make a list of small 5-minute activities that will help you to check your self-care box. Okay? Yeah? 5-minute activities जो आपको अच्छी लगती हैं, वो उनकी लिस्ट बनाओ. Can we all make it? Yeah? ये अगर आप करोगे ये काम, you will really see the benefits. And try it. कोई भी एक एक्टिविटी आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता हर रोज करो, एंड देन यू विल सी द मैजिक. यू विल सी कि आपके पास थोड़ा और ज्यादा टाइम निकलने लग गया है. यू आर एबल टू टेक आउट नाउ 10 मिनट्स, नाउ 15 मिनट्स नेक्स्ट वीक. ठीक है, टाइम निकलने से निकलता है, अपने आप नहीं निकलता कुछ भी. So this practice of 5 to 10 minutes will help you long term in enjoying the activities, enjoying the hobbies, enjoying the passions which you know love, which unstress you, which act as a stress buster for you. Right? आप करके देखो ये. Okay? Now, second strategy which you can do for your self care is delete 3 Ds. D मतलब दिल्ली. दिल्ली को डिलीट नहीं करना. डी मतलब, अगर किसी को अल्फाबेट समझ नहीं आया उसके लिए मैंने बोला डी फॉर दिल्ली, डी फॉर देहरादून. ओके, सो डी, सो डिलीट करना है हमें ये 3 Ds को. कौन से 3 Ds हैं? सबसे पहले डिलीट करना है हमें 3 Ds. स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज 3 Ds. 3 Ds मतलब डिलीट, डेलीगेट एंड डू लेस. Please write it. If you have pen and a notebook, you can write these 3 Ds. Delete, delegate, and do less. Delete का क्या मतलब है? Let's understand that. Get very clear कि आपका टाइम कैसे जा रहा है, आप कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो. ओके? आप टीवी देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हो, आप फेसबुक चला रहे हो, जो भी है, डिलीट दोज एक्टिविटीज दैट आर नॉट एक्चुअली नेसेसरी बट टेकिंग योर टाइम अवे, दैट एक्चुअली डू नॉट सर्व यू. आप उन एक्टिविटीज को डिलीट कर सकते हो. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? अगर आपने टीवी नहीं देखा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? अगर आपको करंट अफेयर्स नहीं पता चले तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? पता होने से भी क्या होगा आपके, राइट? तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला अगर आप इन एक्टिविटीज को डिलीट कर दो. दैट इज नंबर 1 डी. नंबर 2 डी इज डेलीगेट. डेलीगेट का क्या मतलब होता है? जो चीजें आप आगे डेलीगेट कर सकते हो. डेलीगेट वॉट एवर यू कैन. थिंक कि और कौन कर सकता है ये. अब इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग, जरूरी है आपको ही कुकिंग करना है? कैन यू डेलीगेट दैट? एब्सोल्युटली मेघलता, हम डेलीगेट ही नहीं करते. हमें लगता है हम ही परफेक्ट है, हम ही अच्छे से कर पाएंगे, हमारे हाथ का खाना ही हमारी फैमिली को अच्छा लगता है. सीरियसली मैं बता रही हूँ, ये बातें बहुत हैं. और सेम हम अपने बच्चों के लिए भी इतने पोजेसिव होते हैं कि हम ही करेंगे. राइट, राइट. एंड आई विल टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल ओन एक्सपीरियंस. मुझे एक दिन ट्रेवल करना था एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट माय किड्स कि किड्स कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे. एंड माय किड्स आर नॉट वेरी बिग.
वन इज 10 ईयर, अनदर इज 5 ईयर। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा था अरे ये कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होएगा। और मेरे बच्चों ने कहा हाँ मम्मा इट्स फाइन, आपका कुक आ रहा है, खाना हमें बन जाएगा, उनको सिर्फ मतलब है खाना उनको मिल रहा है, उनकी सारी चीजें हो रही हैं, दैट्स फाइन। आप समझ रहे हो, आप भी टेस्ट करके देख सकते हो। और मुझे लगा अरे यार मैं इतनी चिंता कर रही हूँ, मेरे बच्चों को इतना है नहीं। हैं? मेरे बच्चे हाँ बस खाना मिल रहा है आराम से, हमारी ये फैसिलिटी हो रही है, वी आर फाइन। इट्स जस्ट दैट इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड, एग्जैक्टली। सो डेलीगेट करना सीखो भाई, परफेक्शनिस्ट से कुछ नहीं होगा। परफेक्शनिस्ट से क्या होगा, यू विल स्ट्रगल, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आप हमेशा टाइम के लिए भागते रहोगे, रोते रहोगे, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। और अल्टीमेटली बच्चों ने भी हॉस्टल चले जाना है, बच्चों ने अपनी जिंदगी जीनी है, राइट? नाउ डोंट अगेन मिस्टेक मी about being selfish. No, it's not about selfish, it's being, you know, prioritizing. It's all being prioritizing. So delegate whatever you can. Okay, क्या आपके लंच बॉक्स सुबह का टाइम नहीं होता, आपका हस्बैंड लंच बॉक्स पैक कर सकता है, आपके बच्चे कपड़े फोल्ड कर सकते हैं जो इतना फैला हुआ है बेडरूम या फिर हॉल, यू नो, यू कैन स्टार्ट एंगेजिंग एवरीबॉडी। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कपड़े ठीक से फोल्ड नहीं होंगे। बच्चों को नहीं आता फोल्ड करना, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू डेलीगेट and that will give you some breathing space, take help. Okay, गार्डनर हायर हो सकता है, कुक हायर हो सकता है, हेल्प हायर हो सकती है। I had this client, I'm telling you a real story. She was struggling big time. I told ki why don't you hire a, you know, maid? Yeah, and then she hired a part-time maid. Half of her, you know, work got sorted out. When I was in my weight loss journey, I hired a maid because, you know, too many things you cannot do. You are not that भगवान, you this and that, and yeah, support लेना पड़ेगा, लेना पड़ता है ना? आप वहां पे फोकस करो जो आपकी प्रायोरिटी है, जो इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है, हम वी आर जस्ट रनिंग, ड्रिफ्टिंग, ये भी कर लें वो भी कर लें और हो कुछ नहीं रहा, राइट? सो डेलीगेट। एंड 3D, नंबर 3 इज डू लेस। डू लेस का मतलब क्या है, गुड एनफ। ऐसा नहीं है कि परफेक्शनिस्ट, किसी ने लिखा भी परफेक्शनिस्ट, ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्शनिस्ट बनना है। गुड एनफ हो रहा है, वेरी गुड। आप सेटिस्फाइड हो, वेरी गुड। आपको अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है, वेरी गुड, राइट? बस। सो ये 3D को आपको फॉलो करना है, दैट्स अ स्ट्रैटेजी। डिलीट जो एक्टिविटीज आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू, एंड डेलीगेट एंड डू लेस। ठीक है, ये 3D हम करेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 3, या सेपरेट योर शुड्स फ्रॉम योर कुड। अब ये भी स्टीलर्स हैं, ये जो समटाइम्स हम ये सोचते हैं ना, जो शुड होता है ना, इट जस्ट टेक्स अवे अवर टाइम, वेस्ट अवर टाइम, एनर्जी, एंड कीपिंग अस फ्रॉम फीलिंग हेल्दी एंड फुलफिल्ड। ये बिल्कुल आपके डेलीगेट की तरह ही आता है। ठीक है, शुड, अरे मुझे ये करना चाहिए, मेरे को ये यू नो खुद कुकिंग करनी है, वेस्टेज। आई शुड फिक्स दैट पाइप। कभी कभी कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम खुद ही अपने घुसने को हो जाते हैं, वेदर वी नो इट और नॉट, लेट मी ट्राई। आपको पता नहीं होने वाला, पर फिर भी यू विल गेट इन टू इट, आई शुड डू इट, राइट? आई शुड। और समटाइम्स क्या होता है, जो आपको नहीं भी करना होता वो भी आप करते हो। आई शुड नॉट पे एक्स्ट्रा फॉर प्री कट वेजिटेबल्स, आई शुड नॉट पे, आई शुड नॉट गो होम इफ माई कोवर्कर्स आर स्टिल वर्किंग। मैं कैसे जाऊं घर, सारे तो यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं क्यों जाऊं? आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट लेट माई किड वॉच टीवी। सो समटाइम्स दिस शुड जो है ना, ये शुड भी आपका बहुत टाइम वेस्ट करता है। ओके, एंड शुड बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो whenever you get this thought that I should do this, always pause, हमेशा पॉज लो, नोटिस करो क्या ये शुड इंपॉर्टेंट है, या आई शुड लेट इट गो, और आई शुड फॉलो दिस। हमेशा ये पूछो, ये जो शुड है ना, ये शुड भी आपको खराब कर देगा, आपका टाइम खराब कर देगा, वेस्ट कर देगा।
So we have to protect ourselves from this real should also. We should be able to, see, notice it, that is it really important that I should do it, or it can be delegated, or I should not do it, right? Very, very important. So I hope, guys, these strategies will help you in the long way to prioritize yourself. Yeah. Type yes in the chat box if you agree to it. Yeah. Type yes in the chat box if you agree to it. Very nice, Kakoli. Start with 5-10 minutes to start feeling good, whatever you like. Very nice. Kakoli has written the summary of it. 3 Ds: delete, delegate, and do less. And separate shoulds from coulds. Very nice, very nice. Awesome, guys. Awesome, guys. अभी आपको homework भी दिया जाएगा, okay? क्योंकि सिर्फ सुन के अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे, because applied knowledge is power. Okay, knowledge is not power. अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं आएगा, और हमें रिजल्ट से मतलब है, हमें रिजल्ट चाहिए, right? So what I want from your side is bring out your list of ways. Okay, you should love, you show love for yourself. Okay, आप अपने आप को कैसे सेल्फ केयर करते हो, मेक अ लिस्ट ऑफ दैट. सेल्फ लव और सेल्फ केयर. अगर कभी आपको पता है कि you have to love yourself, and there are certain situations, okay, where you start hating yourself, but now you have learned this ki self love is unintentional. Self love is is there no matter what, no matter whether it's negative or positive, what has happened in your life. आप अपने आप से कभी hate नहीं करोगे, आप हमेशा अपने आप को प्यार करोगे, right? So make a list of those ways. Show your love for yourself. Okay, self love and self care. How you gonna do it? Make a list of it and put your answer in the group, whatever group you are in, or if you are part of the app, you can put it in the app. Okay, very nice, Parul. So Parul, आप अपना जो list of ways है to show love to yourself or your self care, put it in the group you are in, ताकि सब पढ़ें, right? अगर हम वो सबको बताएं, right, वो सबको help करेगा कि कैसे हम prioritize कर रहे हैं. Because as a woman, we always, want a community, yeah, a woman supporting a woman, right? So it will be very, very helpful if each one of us, pull each other towards a better life. Yeah. Great. Wonderful, guys. I hope this Women Day, we have really, learned something great, yeah, about self-love and self-care. And we are going to change our lives from here. Yeah. How many of you are ready to take charge of your health? Type me in the chat box if you're ready to take charge of your health. Yeah. Thank you, Dr. Arjun. Great. Thank you so much. Yes, ready. Yeah, awesome. That's what I want to hear. Yes. Write out ways we can do self-love and self-care. Yes. Whatever group you are in or app, please put it there. So it will be awesome. You will also remember every day that ye karna hai, right? Anybody would like to share your story, guys? Let me know. Raise your hand. Okay. All right. Superb. So next week, guys, probably I'll be taking a session on managing your diseases. Okay. So if anybody would be interested, okay, we'll share the link with you. You can join the session probably next week on diseases, how we can manage our diseases. Okay. Yes, Parul, thank you so much. You are also an inspiration. So let's all be an inspiration to each other. Yeah. Yes. And to all the women around, because we need more support, more care. Yes. All right. Thank you, guys. Take care and have a great evening. Happy Mahashivratri and happy Women's Day to each and every one of you. Bye-bye.